Stud form, or it's also called as breeding form. Stud form, stud means male basically. Okay. So stud forms commonly use करते हैं हम लोग stud forms से जहाँ breeding होता है. So it is the place where good thoroughbred horses are produced. ठीक है ना? Even mule form के लिए भी आपको, क्योंकि you need to have a pure line of horse and also pure line of donkey. क्योंकि आपका everyone knows that F1 or the progeny of crossing these two is infertile. तो इसलिए आपका दोनों तरफ से, साइर और डैम की तरफ से प्योर लाइन चाहिए, डांकी का और हॉर्स का भी. और एक्सक्लूसिवली डांकी फॉर्म भी बहुत सारे हैं, कर्नाटक में है, लेह लद्दाख में है, बहुत जगह में है. दीज आर ऑल कॉल्ड स्टड फॉर्म्स. ठीक है ना? जहां स्टड फॉर्म्स होता है, देन यू नीड टू नो सम ऑफ द इंपॉर्टेंट पॉइंट्स. स्टैलियन केयर. ठीक है? एक एथलेट हॉर्स और रेस हॉर्सेस को मेल रेस हॉर्स, क्योंकि और एक चीज है, व्हेन यू से एथलेट हॉर्स, generally we don't differentiate between male and female. This also you should keep it in mind. जैसे ह्यूमन बींग्स में होता है, मेल कॉम्पिटिशन अलग होता है, फीमेल कॉम्पिटिशन अलग होता है, बट इन केस ऑफ रेस इट इज बोथ सेम टुगेदर. ओके, इट इज योर ऑप्शन, चूज दिस और दैट. ओके, बट when it comes to stud form, individual care will be there. Stallion male. Okay, the stallion backstretch should be roomy, airy and should have a plenty of लाइट. जैसे हमने एक फोटोग्राफ दिखाया यहाँ शुरुआत में, आप देखिए, दिस इज ए कुनिगल स्टड फार्म. बहुत बड़ा फार्म है. हम लोग अंडर यूजी में भी हम लोग विजिट में जाते थे वहाँ. राइट, टिल डेट इट एग्जिस्ट. अर्लियर इट वाज बिलोंगिंग टू दी मैसूर महाराजा. लेटर इट वाज परचेज्ड बाय विजय मल्ल्या, ओके, किंग मेकर. सो टिल नाउ इट इज बीइंग मेंटेन्ड बाय द सेम ग्रुप, ओके, विजय मल्ल्या ग्रुप. एंड this farm produces good number of thoroughbred horses, no indigenous breeds, thoroughbred horses, mostly for the race horses. ठीक है? So here the way breeding horses are looked after and the way the race horses are looked after entirely different. The race horses में क्या होता है? Only the motto is to keep the animal lean, slim, fit. Okay, and that too from 6 months to 5 years. क्योंकि 5 years के बाद हम लोग कहते हैं एज डार्स. ठीक, उसके बाद जनरली यूज नहीं करते हैं. ठीक है? एंड जनरली वी यूथनाइज इट, वी किल इट. ओके, मर्सीफुली किल करते हैं ताकि उसको दूसरे लोग यूज ना करें. सो दैट्स व्हाई यूथनेशिया इन केस ऑफ रेस हॉर्सेस इज वेरी वेरी कॉमन. बट हियर व्हाट वी आर टॉकिंग अबाउट इज द ब्रीडिंग एनिमल्स. ओके, यू मे हैव टू यूज फॉर कंसिडरेबल पीरियड. एंड व्हाट यू कॉल इट एज अ स्टैलियन, इट इज ऑलरेडी वेल प्रूवन. उसका परफॉर्मेंस पेडिग्री को देखते हुए कितना हॉर्स जीता है, वो मेल हो फीमेल हो, बेस्ड ऑन दैट वन, दैट इंपॉर्टेंस ऑफ दैट मेल इंक्रीजेस. ठीक है? इसलिए आपका मैनेजमेंट थोड़ा सा स्ट्रिंजेंट हो जाता है. सो नाउ व्हाट आर द स्टैलियन केयर और मेल केयर? स्टैलियन बॉक्स शुड बी रूमी. आइडियल साइज ऑफ बॉक्स शुड बी 4.25 एंड 5. यहाँ स्टेबल में क्या करते हैं हम लोग? बांधते हैं. ठीक है? हमने लास्ट क्लास में आई डिस्कस्ड. ओके, देयर आर 2 टाइप ऑफ keeping method. One is stalls, another is loose box. Stable is a general word, isn't it? पूरा बिल्डिंग को हम लोग स्टेबल कहते हैं. स्टेबल के अंदर इंडिविजुअल एनिमल को जहां बांधते हैं वी कॉल इट एज ए स्टॉल्स, और जहां हम लोग बांधते नहीं उसका साइज बड़ा होता है वी कॉल इट एज ए लूज बॉक्स. और जहां भी ब्रीडिंग फॉर्म होता है, स्टड फॉर्म्स होते हैं, जनरली दे डोंट टाई द एनिमल्स, दे आर इन द लूज बॉक्स. दैट्स व्हाई द साइज ऑफ द एरिया इज relatively bigger. Okay, the stallion must be protected during the extreme cold. Exercise is the most important factor to keep it active. A regular and proper grooming is essential for the health of the stallion. Stallion neither allowed to become lean or fatty, therefore extra energy is given during the breeding season. Stallions are usually put to stud or breeding, okay, at the age of 4 years. Normally 30 to 40 mares are allotted to a stallion, and the stallion has to cover 2.5 times per mare in order to get them full. ठीक है? So out of this, all are general points only. 2 points you should keep it in mind. ठीक है ना? So 30 to 40 mares requires 1 stallion. That too in the natural mating. Brood mares, female. Okay. The stable size remains same. Okay. Brooder mares can be stable in small batches if individual boxes are not possible. छोटा का stud farm होगा. Brood mares are given feed 3 times. No special attention is necessary for exercise if they lead to grazing. जहां भी स्टड फॉर्म होता है उनके पास बहुत जगह होता है. मोस्टली
दिन भर वो ग्रेजिंग में रहता है, बिकॉज हॉर्स जनरली दे लाइक ग्रेजिंग, जैसे शीप एंड गोट होता है वैसे दिस एनिमल्स आल्सो एंजॉयज द ग्रेजिंग. ओके, दैट्स व्हाई द लार्जर एरिया इज लेफ्ट फॉर द grazing purpose. Heat detection is one of the important managerial practices in case of brood. Okay, in presence of the teaser, brood mares can exhibit the heat symptoms. Okay, by raising the tail, by standing quietly, by winking, by splitting urine frequently, bending their hindquarters. Okay, followed by contraction and relaxation of vulvar lips and passing of vaginal discharge. These are the estrus symptoms. And estrus cycle is exhibited 21 days with the duration of 5 days estrus. Now, once you are sure that you need to plan for the covering. Covering means mating. Okay, so mare should be prepared for the covering by putting a proper bandage. Means it is nothing but a cloth. जैसे आपका क्रीप बैंडेज होता है उसी को around the tail. Okay, to prevent the loose hairs by being forced into the vulva and causing the injury to the male. इसको कहते हैं tail bandage and mostly they do it and it's almost required क्योंकि successful of covering is less compared to cattle buffalo. Okay, sometimes if females are maiden first time अगर आपको क्रॉस हो रहा है तो वो माउंट करने के लिए अलाउ नहीं करेगा या किक करने के लिए कोशिश करेगा. So that's why hobbles are put. Hobbles are nothing but restraining instruments which are generally put on the leg. Okay, a mare can be covered 4 days in succession during the heat. Covering should be done preferably in the covering stall. मतलब एक स्टॉल अलग होगा जहां मेल भी लाया जाएगा फीमेल भी लाया जाएगा. Neither male will be taken to the female, female will be taken to the male, rather it will be taken to another place where it is exclusively meant for the covering. So 3 points are important. One is putting a tail bandage. Second is successful 4 days mating is done. Not all the time is necessary, but 4 days is done for the successful the pregnancy. Okay, and also it should be done in a separate place. Next, foaling care. So gestation period, you all know it. Okay, फर्स्ट एंड सेकंड ट्राइमेस्टर में कोई एक्स्ट्रा जरूरत नहीं. इट इज ओल्ड स्कूल फॉर ऑल द एनिमल्स. ओके, फर्स्ट एंड सेकंड ट्राइमेस्टर में किसी एनिमल के लिए बहुत ज्यादा प्रेगनेंसी ड्यूरेशन जरूरत नहीं पड़ता बिकॉज द फीटस साइज इज वेरी स्मॉल. ओके, थर्ड ट्राइमेस्टर में क्या होता है, इट स्टार्ट्स इंक्रीजिंग इट्स वेट वेरी फास्ट. उसी समय देयर विल बी स्टार्ट सिंथेसिस ऑफ द कोलेस्ट्रॉल. ओके, देयर विल बी एनलार्जमेंट ऑफ adder system or memory system, enlargement of the fetus. Okay, it needs lot of extra nutrients. That time you have to give extra feed. Okay, as a pregnancy allowance. Okay, all the pregnant mares should be shifted to the foaling box. Okay, about 3 weeks before the expected date of foaling. Foaling box should be roomy, spacious. Okay, ideal size again same. The advanced pregnant mare should be closely watched for the parturition. Signs of approaching foaling are increased increased size of udder, swelling and relaxation of vulva, appearance of wax. This is very unique in case of horse, that's why I highlighted. Okay, wax in the tip of the teat canal. ठीक है ना, क्योंकि कैटल में क्या होता है आपका अडर सिस्टम मेमोरी सिस्टम बड़ा हो सकता है बट हॉर्स में ऐसे मेमोरी सिस्टम डिस्टिंक्ट मेमोरी सिस्टम नहीं होता. ओके, यू डोंट फाइंड सच ए बिग मेमोरी सिस्टम इन केस ऑफ हॉर्स but appearance of wax in the tip of the teat canal which generally blocks the dribbling of this thing. So that is what you can say. Okay, similar symptoms are mainly जैसे swelling, relaxation of vulva जिसकी वजह से वो आपको visibility पता चल जाता है. Okay, similar symptoms are approaching this one are excitement. Okay, uneasiness, getting up, getting down. Okay, breaks for the profuse what can say sweating due to pain, pawing of leg. Okay, gazes around the flank दर्द की वजह से just बार बार it keeps seeing the flank region, lies down, gets up. Okay, so these are the typical symptoms of the approaching covering. Okay, the whole parturition operation takes 15 to 20 minutes and placenta drops within 1 hour after the foaling. Okay, यहाँ generally twinning का problem नहीं होता है और even अगर if there is a conception of this fetus also generally they try to obliterate or they want to kill another one so that the size becomes ideal. That's an accepted phenomenon in case of horse. So that's why there is less chance of even the obstruction of fetus or you can say gynecological disorders. Okay, so this is regarding the foaling care. So neonatal feeding. Now after the giving birth to young one, neonatal feeding depends upon how well the mare has been fed during the gestation period. Feeding colostrum immediately after birth is very important. Mare's milk is not perfect food to the foal as it is deficient in energy. इसलिए अभी भी आप देखेंगे तो बहुत सारे एनिमल का मिल्क यूज हो रहा है बट हॉर्स मिल्क यूज हो रहा है कुछ कंट्रीज में. ओके, जहां इनएविटेबल है बट अदरवाइज
still it is not considered to be as a staple food. Okay, that's why here, therefore, supplementation of cow's milk after 2 to 3 weeks of its lifetime is also must. Stud farm में, in order to maintain the body weight gain or average daily gain, they go for the additional supplementation of cow's milk only after 1 month, or you can say end of 1 month. Cree feed is generally fed. Cree feed of सब लोग जानते हैं, it's a feed exclusively which contains high amount of crude protein, okay, and high energy with fortified minerals and vitamins and growth promoters, which we call it as a Cree feed. Okay, so generally it is given after 15 days. Okay, and weaning is done 6 months. Even it can be done little early, but average is 6 months generally weaning takes place. Okay.